The topic we are going to discuss about is gases, and the subtopic is explanation of gas laws via KMT. Let's study first Boyle's law. According to one of the postulates of KMT, kinetic energy is directly proportional to the absolute zero temperature of the gas. So 1 over 2 mc square is kinetic energy, that is directly proportional to T. इस directly proportional की जगह हम constant लगाएंगे, that is K. Kinetic theory में हमने एक equation पढ़ी थी, that was PV equals to 1 over 3 mc square. Next, multiply and dividing by 2 on both sides. जो equation थी हमारे पास PV equals to 1 over 3 mc square bar, को हम divide करेंगे 2 से और multiply करेंगे 2 से on both sides. We get PV equals to 2 by 3 kT. 2 by 3 भी constant है. जब आप temperature को constant रखोगे तो it will become PV equals to K, which is the Boyle's law. Next is the Charles law. Consider the same equations जो हमने previously देखी, that was PV equals to 2 by 3 kT, जो कि हमने PV equals to 1 by 3 mc square को दोनों साइड से मल्टीप्लाई भी किया था और डिवाइड भी किया था 2 से. सो यहाँ पे जब आपने ये प्रेशर जो है इसको आप इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इट डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे आके, इट विल बिकम 2 by 3 kT over P. 2K और 3P को आप ब्रैकेट के अंदर लेने और T को आप एक्सक्लूड कर दें. एट कांस्टेंट प्रेशर, जब आप प्रेशर कांस्टेंट रखोगे, 2 over 3 K पहले ही कांस्टेंट है, तो V over T equals to K, that is the Charles law, या V is directly proportional to T. Next we have the Avogadro's law. Consider kinetic equations for two gases. Avogadro's law को हम हमेशा दो gases के साथ consider करते हैं. So PV for the first gas it is 1 over 3 m1 n1 c1 square, or for second gas it is 1 over 3 m2 n2 c2 square. दोनों equations को हम equal करेंगे, we will get 1 by 3 1 by 3 से cancel हो जाएगा, we will get m1 n1 c1 square or m2 n2 c2 square. जब आप टेम्परेचर दोनों गैसेस का सेम कर देंगे तो जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है पर मॉलिक्यूल वो भी सेम हो जाएगी. सो फॉर काइनेटिक एनर्जी इट इज 1 by 2 m1 c1 square equals to 1 by 2 m2 c2 square. This is for gas 1, this is for gas 2. 1 by 2 cancel हो जाएगा and we get m1 c1 square equals to m2 c2 square. जब आप previous expression को इस expression से divide करेंगे, we will get n1 equals to n2, that is Avogadro's law. The equal amount of gases contains equal number of molecules. So this was all about the explanation of gas laws under KMT. I hope you have understood it well, and thank you so much.